Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Supreme Court pra CBI ke Arunachal Pradesh laga contracts Chief Minister Pema Khandu laga khandan majte bhag kura laga allegation against investigation shuru kurible order dishi. NFHRCC pra host kan ke boycott to hisab kurible janadishi. US Iran war te aji ceasefire nimite kotha olaishi. Koridang by-election te duita veterans or charta first-time candidates contest crazy. Supreme Court Praji Central Bureau of Investigation CBI ke Arunachal Pradesh te public काम लगा contracts favoritism था के खिना Chief Minister Pema Khandu लगा खंडान मजते unfair तरीका प्रा भाग कुरा लगा allegations कान investigate करबले order दिशी. Bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta और NV Anjaria प्रा CBI के 2 हफ्ता बितौर preliminary investigation शुरू करबले direct रिशे कोते January 1 तारीख साल 2015 प्रा लॉयकिना December 31 तारीख 2025 माजते public काम लगा contracts और काम order खान साइकिना जुदी लागिले इतु लगा time बाहर cases भी investigate करबले जनादिशे. Agency pra status report to 16 हफ्ता बितौर submit करबले जनादिशे. Court pra state government के पूरा पूरी cooperate करकिना coordination nimite nodal officer appoint करकिना records इको बिया ना करबले direct रिशे. Order to advocate Prashant Bhushan pra represent करकिना NGO SEF Mon Region Federation pra CBI नहले SIT के investigate करिबो दिबो निमिते public interest litigation PIL file करा लगा connection te aha lagasi. Petitioner pra tenders through contracts worth rupees 1,245 crore or rupees 25 crore via काम orders kan favoritism kurikina Chief Minister laga khandan और taijana manu khan ke dia allege kurishi. Plea pra especially Messrs Brand Eagles junto Chief Minister Khandu laga maiki laga se itu laga naam loikina allege kurishi ki Taikan kota namili kina official decisions can influence kina alag-alag contracts paishi koishi. Petitioners be Messrs Alliance Trading Co. junto Chief Minister Khandu laga nephew or Tawang MLA Tsering Tashi lagasi taike Prevention of Corruption Act and Ministerial Code of Conduct bhangai kina contracts dishi koi kina janadishi. Petition be alleged koishi ki Dorji Khandu Chief Minister thaka time te bi eneka unfair practices hoishi koishi. कोते आगे फाले कंपनी तो पेमा खांडू लगा नामते था कि शिकोशी और allegedly बाल प्रा टेंडर bidding process भी नाकुरी किना contracts दी किना आही था कि शिकोय किना स्टेट कृषि रिंचिन ड्रेमा और चेरिंग ताशी के भी केस इटुते रेस्पोंडेंट्स हिसाब ते धाली किना सी जुंटू मतलब ताइजुन भी allegations इटु खान अपोर जवाब दी बोले लागिबो इटु लगा आगे मार्च जासाल कोर्ट भी यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड होम अफेयर्स के allegations इटु अपोर रिपोर्ट्स मांगी किना आसी. Nagaland Foothills Road Coordination Committee NFHRCC pra Tribal Horse Khan ke March 30, 2026 se law decision to strictly cholai kina jabole urge kurishi. Ito decision to April 7 tarik te hubole thaka Land Acquisition Meeting National Highways Act 1956 laga under te postpone hua oporte ase. Committee pra warning dishe ki judi kunba pra ito decision kan namane koile ito to development against hua aro project betray kra hisab te sabo koi kina junadishe. NFHRCC state kuishe ki Dimapur base horse khan pra February 21st tarik te ultimatum dia pichte March 31st 2026 deadline thakishi koishe hoilebi March 31st te hubole thaka meeting to April 7 tarik din nimite postpone kuri dishi koi kina junadishe. Apex और Dimapur base horse khan decide kuishe ki judi NFHRCC ke meeting te namatishi koile aru judi government second phase laga work order issue kurible opor ikun na koile takan April 7 tarik laga meeting to boycott kuribo koishi committee prior to opor te protest hobule pare koikna warn kurishi. Committee pra contractors Messrs JK Construction or Messrs Chaubu and Co ke bar time bishi dia to criticize koikna itu unjustified ase aru kam thik time te khotom na korle contractors khan ke to blacklist kurible demand kurishi. Committee pra Hume Pipes or Slab Culverts Committee thaka upor concern janashe aru DPRTB galti ase koikna PWD Rotten Bridges ke Bhakti aru Parente steel structures supply korible urge kurishi. SASCI loan laga puisa upor ki hoise itute bi transparency na thaka to criticize kurishi.
International News Day United States और ईरान के वार तो रुखाब निमित्ते पाकिस्तान पर मदद दिया लगा पीस प्लान दी शिकोशे आगे दुईटा साइड्स भी झमेला तो रुखाबले লাগিব तो पिछते 15-20 दिन भितर दुईटा कान्ट्रीज लग करिकिना आगे निमित्ते लॉन्ग टर्म पीस डील कारणे नेगोशिएट करबले ओलाबले आगे दुईटा साइड्स भी झमेला तो रुखाबले লাগিব तो पिछते 15-20 दिन भितर दुईटा कान्ट्रीज लग करिकिना आगे निमित्ते लॉन्ग टर्म पीस डील कारणे नेगोशिएट करबले ओलाबो हलेबी इरान टेम्पररी सीज फायर निमित्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जुनटो सामान सप्लाई करा लगा एक इम्पोर्टेंट पानी लगा रास्ता আছে इटु खुलिबले लगा डिसिजन टू रिजेक्ट रिशे आरो जनाइसे की तखन अपर इम्पोज करा डेडलाइन एक्सेप्ट ना करबो कयकना स्टेट कृषि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ईरान के वार्न कृषि की जुदी तखन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ट्यूसडे काली राती 8 बजे तक ते ना खुलिले यूएस ईरान अपर एकदम सीरियस मिलिट्री अटैक लोबो कयशे पाकिस्तान नगा आर्मी चीफ असीम मुनीर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची लगते प्रपोजल अपर ओवरनाइट कथा कुरिशी कयशे रिपोर्ट हिसाबते फेस एग्रीमेंट नगा पार्ट 45 दिन सीज फायर भी हुबले पारे कयशे वार इटुते इरान ते इत्यातक 3540 जुन मुरिशी लेबनन ते 1461 रिपोर्ट करिशे कते यूएस लगा 13 सर्विस मेंबर्स भी मुरिशी और मानु बिशी जखम होयकिना आसे Ahitaka Mokokchung district laga 28 Koridang Assembly constituency te by election opor manubishi saikna jaise kote to seat to MLA Imkong L Imchen BJP Mori Janimite khali hoikna ase voting to April 9 tarik din lubule ase result to May 4 tarik te hubo itu bar voters kan sop milaikna 22390 ase itu to sal 2023 assembly election te thaka 21592 voters pra 798 votes bishi olase itu election te choita candidates participate kuriase Dauchir I Imchen BJP T Chalukamba Ao INC I Abenjang NPP or independent candidates Imti Wapang Kichu Major Toshikaba retired or Im Cha Toba Imchen Khan ase itu candidates kan bitorte 3 Jun Chungtia Busti prase 2 Jun Mangmatong or 1 Jun to Longkum Bustite pra ase candidates bitor T Chalukamba Ao to agete bi 3 bar election te participate kurishe साल 2013, 2018 और 2023 ते और मेजर टोशिकाबा रिटायर तो साल 2023 इलेक्शन ते NPF टिकट पर जाइशे कोते ता अलग वोट्स निमित्ते हारिशे दूसरा चारटा कैंडिडेट्स तो इटू बार फर्स्ट टाइम इलेक्शन ते पार्टिसिपेट करियसे लेट इमकोंग तो फर्स्ट टाइम साल 2003 ते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब ते जीतिशे और इटू पिछते साल 2008, 2013, 2018 ते NPF टिकट ते जीतिशे साल 2018 इलेक्शन ते ताई टी चलखंबा आओ NPP के खाली 128 वोट्स पर हराइशे ताई साल 2022 ते बाकी 21 NPF MLAs खान नगते NDPP जॉइन करिशे किंतु साल 2023 इलेक्शन तो BJP टिकट ते प्रा कंटेस्ट करिकना ताई मेजर टोशिकाबा रिटायर्ड के 410 वोट्स पर हराई दिखना रिकॉर्ड पास बार निमित्ते तो सीट जीता लगासे